Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of energy resource and utilization. And the topic of today's lecture is energy management. This is a brief outline of the lecture. We will be covering the content of this outline in three different videos, inshallah. So first of all, it will be it is introduction, energy management at organization level and as national policy, energy management programs, energy accounting, energy tracking, energy audits, energy management in developing countries, and we will be discussing some inspiring case studies around the globe, and then we will summarize the whole energy management topic. So let's begin with the topic. First of all, let's discuss what actually energy management is all about and how what is the definition of energy management. The conventional definition जो है वो है the efficient and effective use of energy to maximize profit and minimize cost and enhance competitive position. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है या ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो है एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी मैनेजमेंट्स का जो बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि आप इफेक्टिवली यूज़ करें और एफिशिएंटली यूज़ करें एनर्जी को, ताकि आपकी जो है प्रॉफिट्स बढ़ जाए और आपकी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। दूसरी बात है कि आप अपनी पोजीशन को इन्हेंस कर सकते हैं, विच मीन्स कि जो भी आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़ यू आर यूजिंग द एनर्जी efficiently and effectively, definitely you will be having higher your position will is to get stronger as far as the profits is concerned, and then you will be having a competitive position. But the alternate definition or the more comprehensive definition is the strategy of adjusting and optimizing energy. This is really important because adjusting and optimizing means you are using the same energy outlets. आपके पास जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, आप उनको इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, and using the systems and procedures so as to reduce energy requirements per unit of output. This is really important because in a alternate or modern definition of energy management, you should have systems and procedures which reduce the energy requirement, because in the first definition, the traditional definition, you may not be having a system in place which and the procedures it just like and that's a better definition. We should be having system and procedures so as to reduce the energy requirement per unit of output while holding cost and reducing total cost of the producing the output from these systems. So the basic difference between these two definitions are is the system and procedures, and per unit output को आप उसको monitor भी कर रहे हैं और उसको आप उसकी cost कम करने की कोशिश कर रहे हैं. Whereas the first definition is not very comprehensive, and it has lots of things which are not clear. But the alternate definition has system and procedure, and we will be discussing what does this mean in detail in the succeeding slides, inshallah. So moving on, what are the objectives of energy management? First of all, सबसे बुनियादी बात, being a mechanical engineer or being students of the course which are which is quite familiar with the energy concept, improving energy efficiency and reducing energy use, thereby reducing cost. That's a basic requirement, the basic objective of energy management. आप चाहते हैं कि आपकी energy efficiency जो है वो बढ़ जाए और उसकी जो energy usage है वो कम से कम हो जाए. And this energy management जो है वो आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. It could be your corporation, company, power plant, your plant, your house, anywhere जहाँ पे भी energy इस्तेमाल हो रही है, even in your university or wherever you are using energy and you are consuming energy. दूसरा important objective जो है वो reducing greenhouse gases है, emission and improving air quality. That's really important because if you are managing and if you are using energy efficiently and if you are having a reduced energy usage, ultimately it will definitely reduce the gas emissions and improve the air quality. Cultivating good communication on energy matter, this is really important. This is because the another objective of energy management is uh, to have a good communication on the energy matters towards the consumer और जो भी आपके stakeholders हैं. For example, if you have a factory, energy management का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है कि आप किस तरह एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं या एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस बात उस एनर्जी मैनेजमेंट का एक जो ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किस तरह आप एनर्जी मैटर्स या एनर्जी की इंपॉर्टेंस को किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ में या अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में जो आपके आसपास हैं. आपके वर्कर्स हो गए, आपके मैनेजमेंट हो गई. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट.
because energy management is a holistic approach in order to manage the energy in a proper way. एक और objective है developing and maintaining effective monitoring, reporting and management strategies for wise energy uses. This is another very important. You should be developing strategies and maintaining effective monitoring. आप strategy develop करते हैं initially कि how to manage the energy and how to use energy efficiently, and then effective monitoring, continuous monitoring करनी है आपने जो है energy uses किस तरह हो रहा है उसको रिपोर्ट करना है मुस्तकिल, एंड और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो डिवाइस करनी है ताकि आप एनर्जी को इसे समझ करें. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द फर्स्ट डेफिनेशन विच वी डिस्कस दिस part was missing. You need to be you should be having a very effective strategy in place which not only monitors but also report the usage of energy on a regular or frequent basis. Finding newer and better ways to increase returns from energy investment through research and development. This is also a very important objective of energy management. You should be having a very active research and development program in your organization, which finds new and better ways to increase or to improve the energy efficiency. Develop interest in and dedication to the energy management program from all employees. This is about the training and the awareness sessions related to the energy and the energy usage towards the employees, reducing the impact of curtailment, brownout, and the interruption in energy supplies. This is another important because when you ज़रूरी जब एनर्जी आप मैनेज कर रहे हैं या एनर्जी को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कतन मतलब ये नहीं कि आप एनर्जी को इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, and you should not be having a reduction of or the curtailment of energy supplies. तो interruption नहीं होनी चाहिए, and if you are managing it by interrupting the energy, that's not the objective of energy management. So these are some of the objectives of the energy management in any organization or in any setup where you are consuming energy. And if you look around yourself, you can find numerous examples where you can apply energy management effectively. Why energy management? First of all and foremost, economics. Energy management has high returns of investment. यूजली दो तरह से आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप पैसे लगाते हैं फिर उस पर आप कुछ फ़ायदा उठाते हैं. बट दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी चीज़ को सेव कर रहे हैं, इफ़ यू आर सेविंग द बिल्स, electricity bills, and if you are saving the energy bills, that another return of investment. तो energy management के बहुत high returns होते हैं, high returns होते हैं. For example, 5 to 15% typical cost reduction at the launch of energy management program विद नो कैपिटल एक्सपेंडिचर. हम जो बाद में डिस्कस करेंगे तफसील से कि इनिशियली जब आपने लॉन्च किया एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि आपने इनिशियल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, बट इवन देन यू हैव अ 5 to 15% टोटल कॉस्ट रिडक्शन आपको नज़र आती है, डिपेंडिंग अपॉन योर हाउ रिगरस एंड हाउ इफेक्टिव योर एनर्जी मैनेजमेंट प्लान इज, एंड what are different setups in which you are applying it. 30% approximately at the end of program, that's a very big number because when you have successfully implemented the energy management program, usually these numbers are not absolute numbers, these are just representative values. So you are having a very good number, 30%, and savings, and sometimes you can and that goes up to 50 to 70% savings if you apply effectively and efficiently the energy management plan. New energy efficient building can save up to 80% of the energy required in old building. This is another important factor. For example, if you are building a new energy efficient building, and that can actually reduce the cost up to 80% if you are having an older version of the same building for the same purpose. इसके बाद इस बात क्यों समझ लेंगे. For example, if you are constructing a house, if you are living in a house which was built without considering the energy efficiency or energy management, and without considering different losses of energy and losses and gains, and now the energy consumption of that building would be very high compared to if you design a new building considering or keeping in mind all the energy efficiency matters and energy usage. अमूमन हम ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो हम उसमें एनर्जी सेविंग्स की बहुत बात करते हैं. तो अमूमन अगर आप एनर्जी सेविंग्स है, आप हीटिंग कूलिंग लोड अगर आप कम कर सकते हैं उस बिल्डिंग का बाय डिजाइनिंग इट इन सच अ वे so that actually cause reduces the cost significantly compared to those building which are not designed accordingly. तो आप वो जो सब पैसा बचा रहे हैं बेसिकली वो आपकी कॉस्ट ही बच रही है, एंड दैट इज एक्चुअली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट in our indirect way.
Moving forward, another reason of energy management is national good. Energy is a problem, national problem. For example, in USA, very inefficient. 5% of world population spend 25% of global energy. दुनिया की आबादी का सिर्फ 5% है यूएसए में, but they consume 25% of the total global expense. That's a big number, right? So by applying energy management, you can reduce global consumption or the national consumption, and which in return सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं आपके, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंस है आपकी दूसरे ममालिक के ऊपर तेल के मसाइल. अगर आप एनर्जी सही से मैनेज करते हैं तो आपके जो वो इंपोर्ट बिल्स हैं वो कम हो जाएंगे, और आप जो है आपकी डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी. competitiveness, if you are countries with higher cost and higher energy costs have higher cost for the goods and services, really important, because if you are consuming too much energy, आपकी डिमांड बढ़ती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स है या जो सर्विसेज है किसी मुल्क की वो बढ़ जाती है, और आप अपनी मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो खो देते हैं. कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑन राइज ग्लोबली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो फ्यूल कॉस्ट है या जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू जब ऊपर नीचे जाती है तो इसकी वजह से आपकी पैसे जो हैं या बिल्स जो हैं आपके बढ़ जाते हैं. इन्वायरमेंटल इश्यूज हम बहुत बहुत तफसील डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो एक बड़ा कंसर्न है, एंड यू हैव टू अबाइड विद द ग्लोबल प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेशंस. दूसरी बात है कि अगर if you are not managing energy properly, तो there are other solutions, for example the renewable energy solutions and alternate solutions, but those are not complete solution, but you have to have a rigorous energy management plan, and complemented by the alternate energy, because हम सिर्फ alternate and renewable energy से ही अपनी energy problems को solve नहीं कर सकते. So moving for the energy management programs, this is really important, because if you being a mechanical engineer, if you go to an organization and somebody asks you to work on the energy cost cutting, or the cost cutting, or energy to reduce the energy bills, this is really important, and these slides will give you an idea how the energy management program works. Top management must be committed. This is really important. The top management किसी भी organization की, either it's a university, it's a factory, or a power plant, or whatever, they should be really committed about implementing energy management program, because usually what they do, that's a awareness issue. People do not consider that as a cost cutting program. वो नहीं समझते कि ये कोई फ़ायदेमंद काम है. अदर बिकॉज आप जब इन पैसे लगाते हैं और फ़ायदा होता है तो समझ में आता है, मगर आप सेविंग करते हुए जो है वो आपको लगता है कि पैसे आप कमा नहीं रहे, बल्कि अगर देखा है तो आप इनडायरेक्टली पैसे कमा रहे होते हैं अगर आप सेव कर रहे हैं चीज़ को. मिसाल के तौर पर अगर अगर आप यूँ समझ लें कि एक कंपनी है जो कि कुछ वो चीज़ बनाती है और देन उसको उसको बेचती है, एंड देन इट गेट्स प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट इन डूइंग सो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड वेरी इनएफिशिएंटली दे कंज्यूम एनर्जी. बट अगर कोई उन्हें कोई कहता है कि भाई अगर आप अपनी एनर्जी को सही से इस्तेमाल करें तो आप इतनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, तो वो कॉस्ट कटिंग बेसिकली उनका प्रॉफिट में इजाफा कर रही है, बिकॉज उनके जब कॉस्टिंग उन्होंने की थी तो उसमें उन्होंने अपने एनर्जी यूजेस को के बिल्स एनर्जी बिल्स को इंक्लूड किया था एज अ ओवरहेड्स. सो जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है. बेस्ट सिनेरियो हो सकता है कि एनर्जी मैनेजर जो है वो एक एनर्जी मैनेजर या वॉटएवर एनर्जी कोऑर्डिनेटर या एनर्जी डायरेक्टर, जो भी नाम दे दें उसको, जो कि इन तमाम मामलों को देखता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको टॉप मैनेजमेंट खुद असाइन करते हैं कि भाई वर्क ऑन इट. एंड वर्ड्स का सिनेरियो कुड बी कि एनर्जी मैनेजर कोई भी एम्प्लॉई जो फॉर एग्जांपल आप कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर देखता है कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद पहले प्रॉब्लम देखता है और फिर वो कोशिश करता है कन्विंस करने की टॉप मैनेजमेंट को कि भाई ये मसाइल हैं एनर्जी के. तो यहाँ दो डिफरेंट केसेस हैं. मे बी कोई ऐसा केस भी होता है जो इन दोनों के दरमियान लाई करता हो कि टॉप मैनेजमेंट कमिटेड भी है, बट they are skeptical about implementing this new energy management programs in their organizations. So you have to look into it. If need to prove your case first, data analysis and careful forecasting needed. This is really important. अगर आपको अपना केस प्रूव करना है अपनी मैनेजमेंट के सामने कि भाई अगर मैं ये मेजर्स लिए जाएं तो आप इतनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं एनर्जी के हवाले से, तो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ डाटा एनालिसिस, एंड you should be doing careful forecasting, because what is the current energy cost आपने पूरा बताना है, because the top management is usually and always interested in the numbers, in the money number, in number money या in profits, right, or cost. How much can the cost be reduced for each energy source, because this is really important. कितनी पैसे आप बचा लेंगे
ये बताना बहुत ज़रूरी है। हाउ मच सेविंग विद डिड अदर सिमिलर कंपनीज, आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज को, कॉम्पिटिटर्स को, कि भाई वो एनर्जी मैनेजमेंट से कितने पैसे बचा रहे हैं। दीज आर सम डिफरेंट स्ट्रेटजीज विच वन कैन अप्लाई इन द केस ऑफ वर्ड सिनेरियो। टिपिकल सेविंग आप बता सकते हैं कि कितनी सेविंग आप कर सकते हैं इनिशियली, एंड देन आफ्टर सम टाइम्स व्हेन अ प्रोग्राम गेट्स रनिंग, तो इतनी सेव हो सकता है ना लॉन्ग रेंज आपकी इतनी सेविंग हो सकती है। तो आपको यू हैव टू डू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस टू कम अप विद अ वेरी गुड प्रपोजल टू योर मैनेजमेंट in case the management is not committed and you need to prove your case in front of them. So moving further, there are different organizational designs. These designs are like depends upon different organization. For example, if you have a president of the plant and then he assigned a energy management coordinator, and has a energy management committee, so and then the department representative, so you can have a hierarchy of different hierarchies in different organizations. For example, you have an executive vice president who is dealing with the energy management coordinator and having a steering committee and other technical staff. So you can have any for example, multi-divisional, you have multiple division working under the energy management coordinator and has two different committees and teams working under him as energy management technical staff and steering committee. So आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या आपके पास जितने मैन पावर है या स्टाफ है उसके लिहाज से एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको इफेक्टिवली चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रियल एग्जांपल है एमआईटी की। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड यू कैन सी इट इन द लिंक given here. It is about the typical organization designs. The MIT has, although it's a good example because it's a relevant example since you are in university as well. So it's an example in which MIT has MIT senior leadership. The president is the head of the is head of everything, and then there's a leadership team under him working with the energy council of the university, and then leadership is also connected with the energy environmental lab, because that's the most relevant lab which can be used to get input for the energy matters on the campus. And you can also have an external advisory board which can give valuable insight to the university energy management. And there are lots of different teams working under the energy council, which may be from different departments and working on their respective field. For example, अगर मैं बात करता हूँ TH Sofa University की, so we can have a energy coordinator, most likely from an administration, for example, for administration, and then there is a technical team and an administrative team. Administrative team means those who work on foots, and technical teams who give suggestions and technical advice. Those could be from the faculty or even from student as well. From the higher student bodies can also chip in to contribute in the energy management programs, because if you can see there are labs and different labs involved in this hierarchy, and labs have students and PhD and a graduate student which can contribute to the energy management of a university or any organization. So this could be done, and different people from different departments can really contribute into doing to have to implementing a very useful energy management program. For example, you have electrical department, you have mechanical department, and both can give you a really valuable input. Moving further, uh, there are different groups and responsibilities of energy management program. Having a full-time energy management coordinator or energy manager is really important, because it should be a full-time job rather than assigning up additional duties to a person who may not be additional duties to a person, right? So you should be have a dedicated person or staff for this job. Member of the technical committee are typical experts, because since they are technical committee, so you should be having people from strong technical backgrounds, and that's really important. And steering committee means those who consist of interested energy aware employees from different departments and employee. The steering committee usually steer the whole program, और वो implement करते हैं या करवाने मत देते हैं. Usually administrative issues को ये लोग deal करते हैं, but they should not be as technically aware as the technical committee members, but they should be actually at least aware about the energy concerns and around the organization. For each department, plant group
to feel the responsibility for their own energy expenditure. This is really important. So for example, in a big organization, different there are different departments and different divisions, right? So every division should be responsible for the their own division. ये बड़ा important होता है कि for example अगर आप किसी फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ डिविजन्स हैं और हर डिवीजन जो है वो अगर अपने कॉस्ट की कटिंग खुद करता है तो वो एक ओनरशिप लेता है कि मैं अपने इदारे अपने डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट कटिंग कर रहा हूँ, एंड दैट एक्चुअली क्रिएट अ वेरी healthy environment as far the competition is concerned, and then you can have incentives for the specific department division. तो एक मुकाबले की एक बड़ा एक सेहतमंद किस्म का मुकाबले की फ़िज़ा कायम हो जाती है अगर आपके पास डिपार्टमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स और कॉस्ट कटिंग्स को ओन करे. रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एनर्जी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. आपने हमेशा उस सिस्टम को अपने गोल्स को स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है. सफिशिएंट नंबर ऑफ मीटरिंग डिवाइसेस कि आपने मॉनिटरिंग कैसे की जाती है या रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग की जाती है. अब यू हैव टू इंस्टॉल डिफरेंट मीटर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन योर सिस्टम कि वो गैस कितनी इस्तेमाल हो रही है, बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है, पानी कितना इस्तेमाल हो रहा है. तो आपने उन तमाम चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली मॉनिटर करना है बिकॉज इफ़ यू डू नॉट हैव मीटर्स एंड मॉनिटरिंग, फिर आप उस एनर्जी को जहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस तरह वो एनर्जी का डाटा कितना है और उस डाटा मिलेगा नहीं तो आप एनालाइज नहीं कर सकते. तो आपकी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ब्रेक डाउन जब आप व्हेन यू हैव मॉनिटरिंग आफ्टर मॉनिटरिंग व्हेन यू हैव डाटा, तो आप अपनी एनर्जी स्पेंडिंग को बहुत क्लियरली बहुत प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं. ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. एनर्जी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज कंटिन्यूस एंड डेवलप एज न्यू एनर्जी एफिशिएंसी टेक्निक्स. जैसे जैसे आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, आपकी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए अपने आपके एम्प्लॉयज़ की. एनर्जी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर टिपिकली अज्यूम्स रिस्पांसिबल ऑफ दिस ट्रेनिंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन. यूजुअली जो आपके कोऑर्डिनेटर है, द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम अक्रॉस योर ऑर्गेनाइजेशन is responsible for the training programs and arranging trainings and organizing events which help the employees or the member of his team in getting known with the new trends and new strategies of the energy management. So just give so which means reporting monitoring बहुत ज़रूरी है और साथ साथ उसके ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है. They are like there's a graph. This is also just to give you a representative idea. Technical committee types of necessary training, sensitivity to energy management. This is the sensitivity of energy management is always important to everybody across the board. Those who are not in the team or those who are in the team, both for both, because if you are not sensitive towards the energy, अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होगा तो आप कभी भी एनर्जी मैनेज नहीं करेंगे बिकॉज आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. तो सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर टेक्निकल टीम बिकॉज टेक्निकल टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल स्टफ. सो जो नई डेवलपमेंट्स हैं आप उनकी ट्रेनिंग जो है वो टेक्निकल टीम को देंगे. दैट कुड बी फ्रॉम इन हाउस हो सकती है, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं घर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर प्रोफेशनल सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटीज़ एंड कंसल्टिंग ग्रुप्स दे सकते हैं. स्टीयरिंग कमेटी में अदर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है वो बिकॉज स्टीयरिंग कमेटी में यूजली एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं या एडमिन के लोग होते हैं, तो वो वो स्टीयर कर रहे होते हैं. तो उनके लिए टेक्निकल नॉलेज एज टेक्निकल कमेटी वाली नॉलेज जो है वो ज़रूरी नहीं होती, बट दे शुड हैव सम इंडस्ट्रियल डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं या जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही हैं. Plant wise, this is really important for because the most of the people who are associated with these energy management program may not be from the देखो जो प्लांट है उसके अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं वो ज़रूरी नहीं कि इस कमेटी या इस प्रोग्राम का हिस्सा हो. तो आपके पास उनको भी ट्रेनिंग देनी है कि हम उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके गोल्स क्या होंगे कि भाई अगर आप जो है अपनी किस तरह एनर्जी को कम इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये ज़रूरी नहीं, ये आमतौर पर इन हाउस होती है कि आपका जो एनर्जी मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है वो ये ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि उस टीम का हिस्सा नहीं है. सक्सेसफुल स्टार्ट ऑफ एन ईएम रिक्वायर्स. किसी भी एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम के 3 डिफरेंट फेजेस हैं. सबसे पहला जो है विजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टअप, demonstration of management commitment and selection of a good initial program energy management program. We will see in detail these 3 different things. इनकी क्या इनका मतलब क्या है. visibility of startup, this is really important because visibility से मानते हैं कि वो प्रोग्राम आपका कितना नज़र आता है. understand why the program exists and the goals. तो people should be really clear about the existence of the program और उसके goals क्या है.
और वो जो प्रोग्राम है वो लोगों की जॉब्स और इनकम पर किस तरह अफेक्ट करेगा, बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट कटिंग एंड दैट विल incentivize different practices. No, the program has full management support. Visibility जो है उसमें ये बात आपने बतानी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को कि इसमें मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट है, एंड दैट कम्स फ्रॉम द टॉप. नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और आपने उनको क्लियरली बताना है कि वो जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है उससे एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से. तो ये कैसे कर सकते हैं हम कम्युनिकेट? वी कैन कम्युनिकेट थ्रू अनाउंसमेंट्स, मेमोज, न्यू रिलीजेस, कॉर्पोरेट प्लान डिपार्टमेंट मीटिंग्स हो रही हैं आपके पास, फिल्म में वीडियोस हैं. जो भी तरीका आप क्रिएटिव तरीका अपना सकते हैं कि आप अपने आप को विजिबल करते हैं एनर्जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आप करना क्या चाह रहे हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, और वो जो नुकसान तो खैर नहीं होता, क्या फ़ायदा है, और वो जो चीज़ है वो डायरेक्टली टॉप से आ रही है, विच मीन्स दैट्स इंपॉर्टेंट. कि कोई दिस शुड नॉट बी टेकन casually. इसको आपने seriously लेना है. So that's the first part, and this is really important in order to initiate the program. दूसरी चीज़ जो है डेमोन्स्ट्रेशन और कमिटमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट इन प्रोग्राम स्टार्टअप. अगर मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो जो नीचे का स्टाफ है या लोअर स्टाफ है वो उसको सीरियस नहीं लेगा. रिकग्निशन ऑफ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थ्रू पब्लिक प्रेजेस, मॉनिटरी अवार्ड, पब्लिसिटी लीव लेटर. अगर मैनेजमेंट जो है वो अपने जो भी टीम है जिसको एनर्जी मैनेजमेंट प्लान की टीम बनाई है, अगर वो काम अच्छा कर रही है तो आप उनको अचीवमेंट आप उनको रिकग्नाइज करें बाय थ्रू मॉनिटरी अवार्ड्स एंड प्रेजेस एंड व्हाट नॉट. दैट वुड डेफिनेटली बक अप द टीम, और वो उनसे लोगों को जो है वो लोग जो हैं वो मोटिवेट होंगे. रीइंफोर्समेंट ऑफ कमिटमेंट पीरियोडिकली. आपकी पीरियोडिकली रीइंफोर्समेंट ममरास ये है कि आप हर कुछ अरसे बाद इस बात का तहिया करें या अज़म करें कि आप ये काम जारी रखेंगे कॉस्ट एनर्जी, एंड दैट व्हेन द हायर मैनेजमेंट शोज द कमिटमेंट. ये चीज़ नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ये नीचे फॉरवर्ड नीचे लोअर स्टाफ की तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी जाती है. फंडिंग और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट प्रपोजल. देयर इज नो रीजन एनर्जी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. यूजुअली व्हाट हैपन, जब आप किसी भी मैनेजमेंट को एक प्रपोजल देते हैं तो वो आपसे पूछता है कि इसका फ़ायदा क्या है. तो एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो आप बोलते हैं भाई इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना प्रॉफिट है. तो कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी मैनेजमेंट को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह एक वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को ट्रीट करते हैं. तो प्रपोजल जब कोई भी ऐसा प्रपोजल जो कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट हो, इसमें इसके थ्रू और पैसे बच रहे हो, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि उसकी तरफ वो कमिटेड रहे. तीसरी बात ये जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनिशियली, वो अर्ली प्रोजेक्ट सिलेक्शन है कि पहला प्रोजेक्ट जो आप एनर्जी मैनेजमेंट की जो टीम है वो क्या करेगी. अर्ली फेलियर्स कैन बी वेरी हार्मफुल. अगर आपने एक प्रपोजल दिया तो अगर वो कामयाब नहीं हो सका तो वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकेगा. फर्स्ट स्टेप शुड बी रिस्की एंड कंट्रोवर्शियल. कंट्रोवर्शियल में बात किया कि अगर आप, बिकॉज व्हेन यू आर मैनेजिंग एनर्जी तो डेफिनेटली जो लोगों का एटीट्यूड है आप उसकी तरफ बात करेंगे, एंड यू मे बी proposing some energy cuts in your organization which can be controversial among the employees के यार ये तो फॉर एग्जांपल आपको क्या है कि भाई एसी आप इतने घंटे चलाएंगे, इतने घंटे नहीं चलाएंगे, और इस टाइम पे चलाएंगे, इस टाइम पे नहीं चलाएंगे. तो ये तमाम चीज़ें जो है ना अपने आपके स्टाफ में शायद इतनी एक्सेप्टेबल ना हो और इतनी वेलकमिंग ना हो. एनर्जी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर शुड पिक अ फ्यू गुड अपॉर्चुनिटीज विद नो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज द अर्ली प्रोजेक्ट्स. तो इनिशियली आप जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ते हैं जो कि रिलेटिवली सिंपल होती हैं, और लोगों की जो एटीट्यूड है उसको बदलने में इनिशियली आप फ़ौरन जो है वो डंडा नहीं चलाते. कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई आप जो ट्यूब लाइट्स उनको बदल दें एलईडी लाइट से या सिनर्जी सेवर से. एफिशिएंट लैंपिंग की आपने कहा स्टीम लीक्स जो हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली लिंक नहीं है लोगों की कंफर्ट से, तो स्टीम लीक्स को जो है आप कम कर सकते हैं. स्टीम वाटर, हॉट वाटर, हॉट फ्लूइड लाइन, टैंक इंसुलेशन कर सकते हैं. इनिशियली इन तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी एनर्जी की सेविंग की तरफ जाएंगी, एंड विदाउट अफेक्टिंग द स्टाफ और द पीपल डायरेक्टली. बाद और फिर उसकी पब्लिसिटी करनी है फुल ऑन, because that can, if you're publicizing your efforts and the amount of money you save from the program, that will definitely motivate the management as well as the other staff. So पहला जो है स्टेप है वो कि आपका जो अर्ली प्रोजेक्ट है या पहला प्रोजेक्ट है वो
क्या होना चाहिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप फुल एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो लोग जो हैं वो उस चीज़ से उसको रेजिस्ट करेंगे। तो इनिशियली वो चीज़ें जो कि इनडायरेक्टली असर करती हैं और डायरेक्टली लोगों पर असर नहीं करती हैं, नेक्स्ट स्टेज में आप आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों के एटीट्यूड को बदलें एंड दैट कैन, बिकॉज ह्यूमन नेचर होती है। तो दैट्स इट। एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिविटी शुड बी इंकरेज। जब भी आप एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम में जो मैनेजमेंट है वो अपने स्टाफ में एनी कोई भी ऐसा प्रपोजल जो कि क्रिएटिव हो थ्रू बाय फॉर एनर्जी मैनेजमेंट उसको इंक्रेज करना है। ये गोल शुड बी एग्रेसिव बट अचीवेबल। आपने एग्रेसिव गोल होने चाहिए बट वो अचीवेबल हो, मेजरेबल हो और स्पेसिफिक विद डेडलाइन। ये हर किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए वो अचीव नहीं हो सकते। मेजर कर सकते हो आप उन गोल्स को कि भाई हमने ये गोल अचीव किया आफ्टर दिस माइलस्टोन, और इतने इस महीने में हम इतनी कॉस्ट कटिंग कर लेंगे या इतने इतने यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव कर सकेंगे। तो दैट कम्स इन द मेजरेबल डोमेन और स्पेसिफिक डेडलाइंस हो। अदरवाइज फिर मतलब नहीं कि आप सालों में लगा रहे हैं इतनी एनर्जी इस्तेमाल वेस्ट सेव कर रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। Example of goals: total energy per unit of production will drop to 10% the first year. For example, this is the example of goals आप set कर रहे हैं कि आपने कहा कि total energy production unit production will drop by 10% of the first year and additional 5%। का first year जो है इस्तेमाल जो है वो 10% हम कम कर देंगे और with the same strategy if we go to the next year it will drop down to 15%। Within 2 years, all energy consumers of 5 million BTUs per hour or larger will be separately metered। तो these are different goals जो कि जिससे आप एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर, बिकॉज डिफरेंट सेक्शंस हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई जो बड़े कंज्यूमर्स हैं आप उनके मीटर अलग कर रहे हैं। ईच प्लांट इन डिवीजन विल हैव एक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट। अगर हर आपके बड़े प्लांट के अंदर जो छोटे प्लांट्स हैं उनके मुख्तलिफ डिवीजन्स में भी एक इंटरनल एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम आप लॉन्च कर देंगे, दैट्स कुड बी अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर big energy management program। All plants will have contingency plans for gas curtailment। अगर गैस का, for example, these are just examples, अगर कहीं गैस इस्तेमाल होती है और गैस की कमी हो रही है तो उसका redundancy plan या contingency plan आपके पास क्या है in order to avoid the interruption। जो भी बड़े बॉयलर्स हैं आपने कहा कि उनकी उनकी जो वेस्ट हीट को एग्जामिन किया जाएगा, रिकवरी, और उनकी जो वेस्ट हीट रिकवरी है उसको पोटेंशियल को एग्जामिन और एनालाइज किया जाएगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि कोई एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आप प्रपोज कर सकते हैं और आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। और एंड विद टाइम व्हेन द एनर्जी व्हेन द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एंड विद स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल गोल्स with a specific deadline। So these all example of goals are vary with the type of plant and with the type of organization you are working with। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेस शुड बी मेजर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोग्रेस को मुस्तकिल मेजर करें और ट्रैक करें कि वो हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या हम पीछे हैं, क्या हम आगे हैं। डू वी नीड टू एक्सेलरेट, डू वी नीड टू अडॉप्ट एन एग्रेसिव पॉलिसी। कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड बिल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट नॉट ओवरहेड्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एनर्जी कॉस्ट जो है उसको आपने जो कॉस्ट है उसको डायरेक्ट बिलिंग में इस्तेमाल, बिकॉज दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, वो ओवरहेड नहीं है। मेन एनर्जी फंक्शन नीड टू बी मीटर्ड एंड मॉनिटर्ड। जो आपके मेन आपने मुस्तकिल उसको मॉनिटर करना है, मीटर करना है। मीटर से बात कि आप डाटा ले रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि डाटा जिस तरह वेरी हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी कॉस्ट आर इनकर्ड बाय ओनली अ फ्यू मशीन। यूजुअली क्या होता है कि आप किसी भी प्लांट के अंदर जो बड़ा जो एनर्जी का चंक है वो कुछ मशीन्स ही इस्तेमाल करती हैं, बाकी एनर्जी जो है वो मतलब अगर आप उन बड़े एवेन्यूज़ जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट के अंदर आपके पास हैवी मोटर्स लगी हुई हैं, वो दोज मोटर्स आर पंपिंग वाटर्स, राइट, पंप्स लगे हुए हैं। सो आप अगर समहाउ उनको मैनेज करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो आप फोकस करें या केयरफुली फोकस करें या वॉच करें उन एरियाज़ को जहाँ पे बड़ा एनर्जी चंक जो है वो इस्तेमाल होता है, और बाकी जो छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर तवज्जो बाद में दें। बिकॉज अगर इफ़ यू हिट द राइट स्पॉट यू कैन सेव द एनर्जी more efficiently। Moving forward further, there's a very good example of a company called 3M। You can search it। It's a big US company। तो 50 मेजर प्रोडक्ट्स लाइन्स थी इनके पास, 50,000 प्रोडक्ट्स थी इनके इस कंपनी के पास, 50 डिफरेंट फैक्ट्रीज लोकेशन में। दे एनर्जी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट फ्रॉम 70%, 77% from 73 to 2005। They implement a very rigorous energy management program and they improve the productivity energy by 77%।
70 मिलियन एनर्जी सेविंग इन्होंने तो 96 में की, ओवर 1.5 बिलियन सेविंग इन्होंने 73 2004 तक की, दैट्स स्पैन ऑफ 30 इयर्स। 30 सालों में इन्होंने 1.5 अरब डॉलर कमा लिए, बचा लिए सिर्फ एनर्जी सेविंग्स में, एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। Reduction of use by some 29% worldwide from 98 to 2005. Further efficiency improved by 3% year after 2005. Energy employment core staff इनका बहुत कम था even then. Work strategies, conservation maintenance procedures, utility operation optimization, energy efficiency, retrofits through energy surveys and process changes. uh, टेक्नोलॉजी विच लेड टू मोस्ट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट रिकवरी सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, हाई एफिशिएंसी मोटर्स अप्लाई की, इंस्टॉल किए, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स इंस्टॉल किए, कंप्यूटराइज फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टीम ट्रैप मेंटेनेंस, कंबशन इंप्रूवमेंट, वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम्स, thermal insulation, and dots. These are some of the measures which this company has taken in order to improve the energy usage. And 3M stress the important and the efficient use of energy can have an industrial productivity. अगर आप एनर्जी को इस्तेमाल सही से कर रहे हैं तो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है बिकॉज and gets recognized for it. So these are some of the awards which this company got during the different times. 2005 में most valuable pollution prevention production agency, the first ever corporate level outreach award winner, and 2006 में recognized the second year in the row by US environmental protection. So these, when you get recognized on globally or nationally, आपकी आपकी इनडायरेक्टली मार्केटिंग होती है और आपका बिजनेस ऊपर जाता है, विच बिकॉज दे इम्प्लीमेंट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी एंड सेव लॉट्स ऑफ डॉलर्स एज वेल एज दे that serve as they for them as a positive marketing as well. So so in this is it about the first part of the energy management program, and in the next video we will continue from the same topic. So thank you very much.